our focus to some updates coming in. We're understanding a bike was set on fire near the Enforcement Directorate's office where Congress President Sonia Gandhi is currently being interrogated. Those visuals on our screens as well. My colleague Shankar Anand is getting us all those details. Shankar, और क्या details हैं आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरह से ये बाइक को यहाँ जलाया गया है। ये बाइक किस तरह से यहाँ पे जल करके खाक हुई है और वो किस तरह से यहाँ पर संदिग्ध हालत में बाइक को जलाने का एक दृश्य यहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन इस बाइक के साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा इलाका, ये जो कॉर्नर है ठीक मेरे पीछे जो ये आप कॉर्नर देख रहे हैं, ये ईडी मुख्यालय जाने वाला रास्ता है। ठीक आप देख रहे हैं अब्दुल कलाम मार्ग, और अब्दुल कलाम मार्ग के ठीक बाद में वो देखा जा सकता है जनपथ मार्ग, जो कहा जा सकता है देश के कई बड़े जो प्रतिष्ठित जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और सीबीआई डायरेक्टर का भी घर है यहाँ पर। और जिस तरह से देखा जा सकता है दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, और ठीक आपके मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, अब दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पीछे देखा जा सकता है कि जिस तरह से आग लगने की जानकारी मिली, और जहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि इस जानबूझकर इस जगह पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस बाइक को आग लगाई है। लेकिन जिस तरह से संदिग्ध हालत में इस बाइक में आग लगाई गई है, अब ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है, और देखा जा सकता है बाइक को जलाने के वक्त में पूरा का पूरा ये देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। बाइक का नंबर और इसके इसी पोर्शन में सबसे पहले आग लगाया गया है। देखिए, बाइक का नंबर सबसे पहले जलकर खाक हुआ है, उसके बाद गाड़ी का दूसरा जो अन्य हिस्सा है वो जलकर खाक हुआ। समझा जा सकता है कि अगर किसी शख्स का ये बाइक होता तो यहाँ पे मौके पे होता। पिछले 25 मिनट से पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची है, लेकिन अभी तक इस मामले पर जानकारी कोई नहीं दे पा रहा है कि आखिर ये बाइक किसकी है और किस तरह से यहाँ संदिग्ध हालत में बाइक को आग लगाया गया है। अगर इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में ही देश के सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित कई एक बड़े अधिकारी भी इस मार्ग पे रहते हैं, जनपथ मार्ग पे। पहले भी यहाँ पे संदिग्ध गतिविधियाँ पहले भी देखने को मिली थी, लेकिन जिस जगह पर ईडी का दफ्तर है, जिस जगह पर आज काफ़ी हाई प्रोफाइल मूवमेंट्स हो रहे हैं, उस मूवमेंट की जगह पर जिस तरह से संदिग्ध हालत में इस बाइक को आग लगाया गया है, निश्चित तौर पे ये मामला अब जांच का विषय है। और इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अब तफ्तीश में जुट गए हैं कि ये महज हादसा है या एक सोची समझी साजिश के तहत इस बाइक को आग लगाया गया है। ये मामला काफी इन्वेस्टिगेशन का है, और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची है और इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जी शंकर, बने रहिए हमारे साथ। वी ऑल्सो हैव आवर कॉलीग आशीष मेरिशी, who's been tracking all these developments from the Enforcement Directorate. Ashish, even as this questioning continues for Sonia Gandhi, a lot of questions now being raised as to this recent incident that is being reported, whether this was just an accident or whether this was deliberately done. Any more details that you're picking up? And also I want to understand, as far as the overall questioning is concerned, any word coming in for how long could it go on? So nobody knows who actually had put this bike on fire. So nobody knows whether it was intentional or whether it was accidental. It's a matter of investigation. But obviously it's not very far off from the Enforcement Directorate office. So there is a chance that there are certain protesters who would have protested this way because, there is already Section 144 imposed. So, you're not allowed to protest near the Enforcement Directorate office. So there is a chance that the protesters would have done this and maybe they would have escaped out of this area. So it's a matter of investigation. Let the police look into it. But as far as the investigation related to National Herald case goes, one thing I can confirm, I've spoken to senior sources in the Enforcement Directorate and they confirmed to me that the line of questioning is almost similar to that of Rahul Gandhi because they both were holding 38% equity. The Enforcement Directorate is basically looking at the money trail and the final benefit that has reached into the hand of people who occupy positions in Young Indian. Now, interestingly, the answer to the question whether the benefit actually reached them, the answer that Rahul Gandhi gave is, and what answer Sonia Gandhi is giving is almost same. They say that it's a Section 25 company, and Section 25 company does not have a profit and loss account, but it has got an income and expenditure account, which essentially means that the profit does not reach into the hands of the person or the shareholders or the director
directors of that company. Basically, it's a form of an NGO. So Okay. the benefit will never reach, or they cannot withdraw any cash or any money out of it. But ultimately, the Enforcement Directorate sleuths believe that this entire transaction was done in a manner so that, to give the color that everything is right, there is nothing wrong in the transaction. But Enforcement Directorate believe it's a sham transaction. Okay. It has been purposely done just with a criminal intent, so that the benefit of more than 2,000 crore rupees of assets reach into the hands of people who own Young Indian. So let's see how things move forward. Does Sonia Gandhi also say Sure. that the entire transactions was done by Motilal Vora, and we all know Motilal Vora is no longer alive. So, it will be very interesting to see what answers she gives to the questions which are being posed to her. But by evening, maybe by 6:30, Okay. we can expect Sonia Gandhi to leave from here, and later in the day we can have some details from our sources on what answers she has given Sure. to the questions that have been posed to her, that we can maybe give later in the day. Sure. Ashish, I'll just request you to stay on with us. I quickly want to go back to our colleague Shankar Anand. Shankar, जैसे आप पहले बता रहे थे, अभी काफी सवाल में इन्वेस्टिगेशन भी होगी. पुलिस ऑफिशियल्स का क्या कहना है कि आप अपने आसपास कोई एक्टिविटी देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम यहाँ मौके पे पहुंची है, और ये देखा जा सकता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम मौके पे पहुंची है और इस फोटोग्राफी की जा रही है. फॉरेंसिक जांच करने के लिए अब टीम यहाँ पे पहुंच गई है, और जो इस मौके वारदात का बकायदा फोटोग्राफी किया जा रहा है. फोटोग्राफी देखा जा सकता है कि यहाँ पर किया जा रहा है, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुंची है. ठीक हमारे पीछे यहाँ पर देखा जा सकता है कि इन तमाम मसलों को समझने के लिए और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं. किस तरह से मामला हुआ, कब की यह घटना है, और ये इलाके की बात करें, यहाँ पर काफ़ी वीवीआईपी लोग यहाँ पे रहते हैं. कई ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे वीवीआईपी यहाँ पे रहते हैं, और ये जो इलाका है दिल्ली पुलिस का, दिल्ली लुटियन जोन्स का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है. यहाँ तक कि सीबीआई डायरेक्टर के आवास भी यहाँ पे चंद दूरी पे है, और सीबीआई जो डायरेक्टर के घर के साथ साथ ठीक पीछे वहाँ पर जिस तरह से ईडी का एक और मैं विजुअल्स दिखाना चाहूँगा. देखिए, फॉरेंसिक टीम यहाँ पे पहुँची है. फॉरेंसिक टीम पहुंची है मौके का मुआयना करते हुए. यहाँ पर अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे टीम पहुंची है, और यहाँ पर देखा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अब टीम यहाँ पे जुट गई है कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा मामला हुआ, किस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, और जिस तरह से संदिग्ध हालत में यहाँ पर बाइक में आग लगाई गई है. यहाँ पे उस समय तमाम सामान को दिखाना चाहूँगा. फिंगरप्रिंट किट ये देखा जा सकता है. फिंगरप्रिंट किट जो है वो लेकर पुलिस की टीम आई है. देखिए, मौके का मुआयना किया जा रहा है, मैपिंग किया जा रहा है, और फॉरेंसिक टीम मौके पे पहुंची है, जो अब ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि यहाँ पर किस तरह से संदिग्ध हालत में इस बाइक को आग लगाया गया है. जी. So whether it was an accident or whether this was intentionally done, that is what the forensic team, which is at the spot, will be looking into. Shankar, I'll request you to stay on with us. We're getting some updates also coming in. As Sonia Gandhi's interrogation is still underway at the ED office, Youth Congress workers have now gone on a rampage in Nagpur. Look at the visuals that we are putting out. And this was actually very similar to what we had seen play out even at the AICC headquarters in the national capital today. Vinay Deshpande is joining us with more details. Vinay, talk to us about what's happening in Nagpur. Well, this incident happened today afternoon during a protest where Youth Congress protesters had gathered at GPO Chowk. Some of the protesters brought a car from the scrap yard and they set that car on fire. Now the police swung into action. We can see those visuals on the screen. The police have also, taken into custody several of the Youth Congress activists. This happened during the peak of the protest that was being done by Congress in the name of Satyagraha. These Congress workers brought the car from the scrapyard and set it on fire. This protest was led by Yuva Congress Pradesh Adhyaksh Kunal Raut. And, the youth suddenly turned into a rampaging mob. We can see that the car was set on fire. The police have now said that they will take appropriate action. As of now, they have already taken into custody several persons, several Youth Congress activists who were involved in that protest in Nagpur. Vinaya, thanks a lot for getting us all those details. This is a story that we'll keep tracking very, very closely. For now, we're slipping into a very short break. We're coming back with lots more.